Ladies and gentlemen, in today's class, we will be discussing two essays topics. These two essays topics are literary and philosophical. This kind of essays needs a lot of general knowledge, expression capability, communication skills, and a lot of creativity, depth, critical thinking. Otherwise, you are unable to write on such topics. That's why you need a lot of depth and scholarly academic approach so that you are able to write on such general topics. These topics are called general topics, philosophical topics, non-issues based topics, and literary topics. These have different names. And as the name indicates, general topics, so you need general knowledge for it. Otherwise, it will be difficult for you to write on such topics. The other topic is specific topic or issues based topic. Specific topic or issues based topic. So you can prepare those topics, you can get data, information, and then you can write on those topics. But these general topics need a lot of general knowledge, general ability, vast reading, a lot of critical thinking, a lot of creativity, and then you are able to write on these topics. Now, number one is to understand the topic, that what this topic means. For example, topic number one that we have, that is, sometimes we do not see what we see. Sometimes we do not see what we see. So please write this topic as a comment. Write this topic as a comment. Sometimes we do not see what we see. Write it as a comment. है माकूलात और दूसरा क्या है, महसूसात. माकूलात जो है वो अकल के जरिए हम इस पे अमल करते हैं या उसको समझते हैं. मतलब हम कहते हैं ये चीज़ माकूल है. माकूल का मतलब क्या है कि ये अकल के करीब है. ठीक है, मैंने उसको देखा नहीं है अपने आंखों से, लेकिन मुझे वो चीज़ माकूल लगती है. सो दैट इज रेशनल, rationalism. And the other is empiricism, empirical, perception, जिसको मैं परसीव करता हूं, आंखों से देखता हूं. तो अब खुदा का जो दलील है कि खुदा मौजूद है या खुदा मौजूद नहीं है, सो दैट इज ओनली रेशनल, दैट इज ओनली थियरेटिकल. क्योंकि खुदा कोई चीज़ नहीं है कि आप कि कोई उसको दिखा दे कि यार ये देखो ये खुदा है. लेकिन ये जो कप है इसको मैं देखता हूं. I can see the cup, I can touch the cup through my senses. Now this topic means that sometimes we do not see what we see. We see things, but we don't see it. Because our eyes have limited capacity. Our senses have limited capacity. Our perception can be deceptive. So the result is sometimes we do not see what we see. Now you people, you are listening to me and you are seeing me, but you do not understand me. You don't know my value. कि नईम खान 9 बजे जो है हाजिर होता है, और नईम खान कितनी इंपॉर्टेंट बातें करता है,
और नईम खान की बातें मेरे लिए कितनी मुफीद है, लेकिन आप नहीं सुनते, आप नहीं देखते। आप भी बुद्ध की तरह या तो मौजूद नहीं है, अगर है तो कोई पल्ला नहीं पड़ता कि भाई क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है। ठीक है, आपके सामने बच्चे की तरह गोड़ जो है 1 किलो गोड़ पड़ा है, लेकिन बच्चा कहते हैं जी मुझे आइसक्रीम दे दो। वो गोल्ड को नहीं देखता कि यार ये गोल्ड जो है, ये सोना कितनी कीमती चीज है। तो हम देखते तो है, लेकिन हम नहीं देखते, क्योंकि हमारा देखना जो है वो महदूद है। सो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स is called technically paradox. 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 Paradox means self contradiction. Self contradiction. हम देखते हैं लेकिन हम नहीं देखते, तो ये तरदीद है, अपने बात को खुद रद्द करना है। So I hope you got the message. It is a very philosophical topic. Sometimes we do not see what we see. So this is criticism on senses, criticism on experiences, criticism on perception, and this is against the philosophy of Berkeley. This is more in the favor of solipsism. Today I delivered a lecture on solipsism, and I gave you a text in LPCS group as well. So these topics are general topics, and it needs general preparation, general ability, general knowledge. So if you are generally capable, then you will be able to write on such topics. Otherwise, only issues based topics, कि भाई वाटर स्कैरसिटी क्या है, पावर्टी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो उसी को आप तैयार करोगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए और आप उसको लिखें। लेकिन ये जो जनरल टॉपिक्स है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वसी मुतालिया और ऑब्जर्वेशन चाहिए, मुशाहिदा चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप जनरली काबिल नहीं हैं तो आप इस तरह के टॉपिक्स को नहीं लिख सकते। नोट्स में मैंने आपको डिटेल दी है इस टॉपिक पे। द सेकंड टॉपिक इज दैट द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। नाउ in international relations, we know that there are 3 ways to resolve issues. हम issues को 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। Number 1 is diplomacy, talks, table talks, reasoning, arguments, बातचीत से, पार्ले से हम जो है मसाइल हल करते हैं। मेरे और आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, रीजनिंग करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं। नंबर 2 इज इंटरनेशनल लॉ, उसको हम किसी कानून अदालत में ले जाते हैं। एंड नंबर 3 इज वॉर, फिर हम लड़ते हैं। तो जो लोग लड़ते हैं वो इसलिए लड़ते हैं कि वो बातचीत नहीं कर सकते। जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, लॉजिक नहीं है, आर्गुमेंट्स नहीं है, दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो उसके पास फिर क्या है? फोर्स है। फिर वो जबरदस्ती जो है अपना काम निकालता है। सो दिस टॉपिक इज अगेंस्ट वॉर, अगेंस्ट फाइटिंग, अगेंस्ट क्वारलिंग, अगेंस्ट द यूज ऑफ फोर्स, against the use of violence, and it is in the favor of reasoning, talks, discussions, debates, and you have to give priority to discussions, debates, conversation, dialogue, and not war, fighting, violence, guns. No to guns. Guns nahi. So this also gives us importance of democracy, where we resolve issue by democratic process, by democratic culture, by voting, by bullet, not by bullet, but by book. हम किताब इस्तेमाल करते हैं, हम गोली जो है वो इस्तेमाल नहीं करते।
So this is the purpose of this topic, and I have given you the outlines for these two topics, explanation of these two topics, as well as some paragraphs on these two topics. ये वैसी आप पढ़ लें, एक जो है परसेप्शन पे है और दूसरा जो है वो अगेंस्ट वायलेंस है, नॉन वायलेंस. आप इसमें गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कायदे आज़म का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कायदे आज़म ने एक मुल्क बनाया बग़ैर वायलेंस का. बाचा खान का दे सकते हैं, नेल्सन मंडेला का दे सकते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मुजाहिमत लोग कैसे करते हैं और फोर्स को इस्तेमाल नहीं करते. जो इग्नोरेंट होता है, जो टेररिस्ट होता है, वो फोर्स को यूज करता है. आप इस टॉपिक के अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि यार कभी कभी फोर्स का इस्तेमाल ज़रूरी है. अब एक डाकू है, क्रिमिनल है, तो वो तो फोर्स के बगैर उसको समझ नहीं आएगी जब तक उसको डंडा न दिया जाए. इसको आप मैनेजमेंट में भी डाल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसमें टू थियरीज है, थियरी एक्स एंड थियरी वाई. थियरी एक्स इज टू यूज फोर्स बिकॉज ह्यूमन नेचर इज बैड. You have to forcefully control people. And theory Y means that no, human nature is good. You should use motivation, inspiration, reinforcement, encouragement, rewards, and then people will be performing better. So these are two vast topics, and you can extend it to many areas like realism versus idealism or liberalism. रियलिज्म कहता है कि जी फोर्स के लिए तैयार रहो. आइडियलिज्म, लिबरलिज्म कहता है कि नहीं जी, फोर्स की जरूरत नहीं है, इंसान बड़ा अच्छा है, ताउन से जो है मसाइल हल होंगे. सो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दीज टॉपिक्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज रीड द नोट्स एंड राइट ऑन दीज टू टॉपिक्स इन योर ओन लैंग्वेज. क्लास से पहले और क्लास के बाद जो है 2 दफा नोट्स का पढ़ना जरूरी है. दोनों टॉपिक्स में मैंने आपको आउटलाइंस भी दी है, तो वो आउटलाइंस पढ़े, एक्सप्लेनेशन पढ़े, पैराग्राफ्स पढ़े, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट ऑन इट. क्लास का मतलब है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि भाई ये टॉपिक है क्या चीज. यस. So terrorists, they do not believe in negotiations. That's why the use of force legitimately, legally, by state is sometimes indispensable. You cannot go without force. So let's go to the next class, IR, International Relations, and there we will be having similar topic which is about the security.